Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine. This is me, Muhammad Ahmad, your English teacher. As you know, we have finished about first 7 chapters of Mr. Chips, and now I am going to discuss about chapter 8 of Mr. Chips. In chapter 8, as you know that in the previous chapters, we came across that the wife of Mr. Chips and his newborn baby had died. So in this chapter, we'll discuss about how it created an impact on his psyche, how it affected his mind. So basically, I'm going to start chapter 8. And there was always in his mind that spring day in '98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything he had happened differently. So in these lines, basically these lines discuss about the spring day in 1898. Everything happened according to the time, according to their situation, but the mind of Mr. Chips had suddenly changed because of the trauma he had faced due to the death of his wife and newborn child. So the first meaning of the second line, in the second line, the pass through meaning basically when you move through certain conditions. As in some horrifying nightmare, basically he faced different terrible situations in his mind. एज़ वी नो डैट जब कोई हमारा कोई फ़ौत हो जाए, जब कोई हमारा कोई करीबी ना रहे, तो फिर हमारे माइंड में कुछ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नाइटमेयर्स आ जाते हैं. हमें दिन में भी बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स देखने को मिलते हैं. हमारे हमें नींद नहीं आती. इसी तरह मेरे चिप्स के साथ भी यही हाल हो रहा था उनका, कि मतलब कि एवरीथिंग, मतलब कि हर चीज़ क्या कहते हैं एक नॉर्मल रूटीन से चल रही थी, जिस तरह वैसे ही सारी रूटीन चल रही थी, लेकिन उनका जो मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो गए थे. अच्छा, now came across the now we will pass through his another student, young Faulkner, had met him there in the lane outside the school. मतलब कि उनसे उनका एक स्टूडेंट मिलता है, क्या कहते हैं स्कूल के बाहर. लेन कहते हैं एक रोड को, ठीक है, जो स्कूल के बाहर थी, वहाँ पे जो फॉकनर होता है वो क्या कहता है, प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग अप. Basically, his student Faulkner is saying that my friends or my other relatives are coming, so I need an off for catch up with my friends or my relatives. So he will ask Mr. Chips, can I miss chapel? Chapel is basically is the worship of Christians, and chapel is a part of a large church for worship. मतलब एक चर्च में एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पे इबादत की जाती है, जो क्रिश्चियंस करते हैं. तो वो कहता है कि हो सकता है, वो जो फॉकनर कहता है कि मैं जो ये वर्शिप का टाइम है वो भी मिस कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए. मिस्टर जब्सा कैसे कहते हैं, यस यस यू कैन गो. अच्छा, नेक्स्ट फॉकनर आस्क अबाउट जी, एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम. तो क्या मतलब मैं उन्हें स्टेशन में जाके मिल सकता हूँ, जो मेरे जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, जो मेरे जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है. तो मिस्टर चिप्स क्या कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही नियरली आंसर्ड, यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर. Mr. Chips basically talked about that you can also go to fires because I don't care what you are doing, what you can do, because my wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. अब मिस्टर चिप्स को बेसिकली उस ये गम इस चीज़ का होता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उनके चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी मर जाता है इस तरह, ठीक है, मैं क्यों जिंदा हूँ. बेसिकली ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड. एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन. अब मिस्टर क्या करते हैं, नोडेड बेसिकली क्या होता है कि आप जिस तरह को इशारा कर देते हैं, मतलब कि जो अपने हेड से कोई अगर आपसे पूछता है, आप नोडेड करते हैं ना, मतलब कि सारे ला देते हैं, आप या यस नो पे आंसर दे देते हैं सारी ला के. एंड स्टम्बल्ड ऑन मतलब कि आप बाई चांस किसी से मीटअप कर लें, ठीक है. ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबडी और टू रिसीव कॉन्डोलेंसेस. अब मिस्टर चिप्स क्या चाहते थे कि वो कैन नोबडी कैन डिस्टर्ब हिम, और नोबडी कैन
give him condolences about the death of his child or his wife. और वो किसी की सिंपथी नहीं लेनी चाहते थे। कंडोलेंसेस क्या होता है कि ताज़ियत वगैरह कहते थे, कोई मुझसे ताज़ियत भी ना करे। ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ़ ही कुड। वो बेसिकली जात क्या कहते थे कि वो चीज़ों के आदी होना चाहते थे कि जो अब हो चुका है वो उस पर ही क्या कहते हैं ज़िंदगी गुजारें आगे। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड ऑफ वर्ड्स ऑफ अदर ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर। इसी तरह अटेंडेंस के बाद उन्होंने अपने फोर्थ फॉर्म मतलब कि आप इट हेयर इट मीन्स अबाउट द फोर्थ लेक्चर यू कैन से setting them grammar to learn by heart. He taught the students about grammar and make the tasks to students about learning the grammar by heart, while he himself stayed at his desk in a cold, continuing trance. वो अपने डेस्क में बैठे रहते हैं, डेस्क के पास बैठे रहते हैं, तो लेकिन वो कंटिन्यूसली ना वो एक ट्रांस में होते हैं। ट्रांस कहते हैं आप क्या कहते हैं इंसान का दिमाग काम ना करे, वो डे ड्रीमिंग करे, वो बैठा कोई और काम करने के लिए लेकिन उसका माइंड कहीं और जा रहा हो। सडनली समवन सेड प्लीज सर देयर आर लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू। एक और उनसे हो सकता है कोई उनके स्टूडेंट कहता है कि सर आपके लिए कुछ लेटर्स हैं। सो देयर वर ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोस ऑन देन they were all addressed to him by name. All of the letters have addressed written of his name, Mr. Chips. He tore them open one after the other. वो हर एक लेटर खोलते हैं, ठीक है, but each contained nothing but a blank sheet of paper.